Hello student, today we are going to discuss what is chemical formula and how to write the chemical formula of compound. Okay, so first we discuss about what is the definition of chemical formula. Okay, so simply chemical formula is the symbolic representation. Okay, symbolic representation of a molecule of a compound, simply called chemical formula or formula of that compound. Okay, look here, chemical formula. Okay, and how to write the chemical formula. So first we discuss what is the definition of chemical formula. So look here, the symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula or simply formula of that compound. Okay, so what is the definition of chemical formula? The definition of chemical formula is that the symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula or simply formula of that compound. Okay, now what is the meaning? Okay, look here, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड. Okay, here sodium chloride. Now what is the chemical formula of sodium chloride? Look here, the chemical formula of sodium chloride is NaCl. Okay, examples की बात करें. Okay, so this is the sodium chloride and what is the chemical formula of sodium chloride? The chemical formula of sodium chloride is NaCl. So look here, what is the symbol of sodium? Na and chloride Cl. Okay, so the chemical formula of sodium chloride is NaCl. Look here, what is the definition? Symbolic representation. Look here, symbolic representation. Chloride is a compound and the chemical formula is sodium chloride. Okay, so how next point, how to write the chemical formula of a compound. So all of you know very well that what is radical. Okay, radical. Once again I remind you what is radical. Radical means an atom or group of atom of an element which carry positive or negative charge and behaves as single unit. Okay, known as radical. So what is radical? Radical means atom or group of atom of an element which carry positive and negative charge and behaves as a single unit are known as radical. Okay, अब मैं यहाँ पे रेडिकल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो रेडिकल से मिलकर बना होता है. अभी हम एग्जांपल देखेंगे कैसे. ओके, तो व्हाट इज रेडिकल? एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग positive or negative charge and behaves as a single unit. Okay, radicals. Now radicals are two types. One is basic radical and second one is acidic radical. How can we identify the radical are basic radical or acidic radical? Basic radical means cation and cation means containing positive charge. Okay, and acidic radicals means anion and containing negative charge. Okay, so how can we identify? If any species containing positive charge means cation and cation means what? Basic radicals. Okay, and if any species containing negative charge means anion and it is acidic radical. याद रखना, A for acidic, A for anion. Okay, now it means species having positive charge and negative charge are known as basic and acidic radical respectively. Okay, so any compound, the formula of compound made up from basic radical and acidic radicals. Okay, and acidic radicals and basic radicals are also different types. Okay, there are many types. First, basic radicals which contain single positive charge.
basic radicals which contain double charge, basic radicals which contain triple positive charge, and basic radicals contain tetra या 4 positive charge. Okay, in similar way acidic radicals means anions also contain negative charge, single negative charge, double negative charge, triple negative charge and 4 negative charge. So radicals, basic radicals or acidic radicals may be monovalent, divalent, trivalent or tetravalent. Okay, so all of you look here. Radical, already we have defined what is radical. Radical means atom or group of atom having positive or negative charge and behaves as a single unit. Okay, now radicals are two types. Look here, basic radicals, acidic radicals. Okay, basic radical means cation and acidic radical means anion. Basic radicals, cation means radical which contain positive charge, okay, and a radical which contain negative charge. Look here, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है. Okay, look here, sodium it contain 1 positive charge, so this is known as sodium. Magnesium contain 2 positive charge, magnesium. Aluminium contain 3 plus charge, aluminium. And this is the, what is the definition of radical? Atom or group of atom. Look here, this is an example of group of atom, NH4 plus, and behaves as a single unit. Behaves as a single unit means this one behaves as single unit. Suppose यहाँ पे हम यदि suppose तो कर लें x, तो x पे क्या, sorry x नहीं, यदि हम z कर लेते हैं तो z पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो मीनिंग ऑफ single unit. Now look here, anion, radical which contains negative charge. So look here, when radicals, acidic radicals, okay, we use in acidic radicals IDE. Look here, this is the chlorine atom, but when it acquire 1 negative charge, then it become chloride. It become chloride. Okay, look here, this is the chlorine, but when it acquire minus charge, minus 1 charge, it become chloride, IDE. Okay, now look here, example of acidic radical, chloride ion Cl minus. Look here, oxide, IDE, oxide ion O2 minus. Okay, sulfate SO4 2 minus, phosphate PO4 3 minus. These are the examples of acidic radicals and basic radicals. Okay, now the most important point related to this, okay, all of you learn the acidic radicals and basic radicals. Okay, acidic radicals and basic radicals by univalent, divalent, trivalent या tetravalent. ये याद होना चाहिए. एक बुक में दिया है, चार्ट दिया है, टेबल बना हुआ है, उस पर आप लर्न करोगे. ओके, चार्ज सहित, चार्ज के साथ. ओके, तो यदि लर्न कर लोगे तो केमिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने में क्या होगा? इजी होगा. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल. ओके, अब देखो मैं बताता हूं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे NaCl हुआ. ओके, तो all compounds made up of acidic radicals and basic radicals generally. Okay, now look here, sodium chloride. Okay, look here, if you divide this sodium chloride, so there are two parts. One is sodium and second one is chloride, that is Cl. Okay, and look here, sodium, it is an example of univalent, means contain 1 plus charge. Okay, and chlorine, it contain 1 negative charge. Okay, and these are cancel. अब एक एक करते हैं प्लस और माइनस. अभी मैं बताऊंगा कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, तो वहां पर फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पर क्या करते हैं कि सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल है हमने, और इस पे कितना चार्ज होता है? +1.
क्लोराइड Cl माइनस। ओके, अब यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे सोडियम 1 क्लोरीन 1। ठीक है, अब प्लस और माइनस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक, अब 1 लिखा है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसका लिखेंगे फार्मूला सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आ गया सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला RiNaCl, तो हमको क्या लर्न होना चाहिए, सिंबल विथ चार्ज, सिंबल विथ चार्ज। उस पे जितना सिंबल, पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल, और जितने चार्ज होंगे उसको लिखेंगे। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे उसको हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, बट एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम, ओके, तो मैग्नीशियम यहां पे हम लिखते हैं। ओके, मैग्नीशियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg, Mg containing 2 positive charge. Now chloride, once again chloride means Cl minus 1. Okay, now अब यहाँ पे देखो, इस पे +2 चार्ज, यहाँ पे -1, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Mg2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl1। और इस जो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो Mg का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा तो Mg ही रहेगा, और क्लोरीन में आ गया तो MgCl2। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we discuss about the how to write the chemical formula of the compound and chemical equation. Thank you.